सभी को राधे राधे। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके सारथी प्रतिभा शर्मा। हमारा भगवत गीता के अध्याय हम रोज आपको कुछ ना कुछ पाठ सुना रहे हैं। तो आज हमारा 15वां अध्याय है जो हमारी छोटी सी सारथी आशा अग्रवाल के द्वारा सुनाया जा रहा है। तो उसको आप ध्यान से सुने और अपने बच्चों को कम से कम एक प्रैक्टिस जरूर सिखाएं कि वो रोज एक श्लोक तो याद कर सके, ताकि जीवन में उनका भी मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा हो सके। आष्का जी, अध्याय स्टार्ट करें आप। Namaste everyone. I'm Ashka Agarwal from Hyderabad. I'm 11 years old. Today we are starting chapter 15 of the Bhagavad Gita. It is called Purushottama Yoga. In simple English, that means the yoga of the Supreme Person. In chapter 14, Sri Krishna Bhagwan Ji explained the three qualities that influence the way people think, feel and behave. Now, in chapter 15, Sri Krishna Bhagwan Ji explains more about the soul and its connection with God. Let's see what Sri Krishna Bhagwan Ji explains to Arjuna through this chapter. Before beginning the recitation, let us pray together. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vitveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now I will begin the recitation of chapter 15, Purushottama Yoga. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूला ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता प्राणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्तत्त्वानि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शस्तानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्तायं विषयानुपसेवते
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरामतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः. Now I will explain you the simple meaning of chapter 15. In this chapter, Shri Krishna Bhagwan Ji describes something very interesting. He talks about a tree, but not a normal tree. He says this tree has roots at the top and its branches growing downwards. When I first read that, I thought, wait, a tree with roots at the top? That sounds so strange. My teacher explained it simply. She said, Shri Krishna Bhagwan Ji is describing the whole world like this tree. The roots are in God at the top and everything below. All of creation, all living beings are like the branches growing downward from Him. I found that so interesting because it means everything that exists is connected to God at the root. Like however big or small we are all part of the same tree. And the root is God. The image of that tree stayed with me for a long time. That is what I understood from chapter 15. Thank you so much and watching and listening today. In the next video, we will begin chapter 16, Daivatsura Sampad Vibhaga Yoga. If you like this video, please like, share and subscribe and click on the bell icon for future videos. Please also share this with your family and friends. Jai Shri Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आष्का जी। इसका हिंदी में सिंपल अनुवाद बता देती हूँ मैं। भगवान बताते हैं कि प्रत्येक जीव उनका ही अंश है, लेकिन माया के कारण वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है।
इसका मुख्य संदेश क्या है इस पाठ का? मोह और आसक्ति छोड़कर परमात्मा की शरण में जाएं, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानें और भगवान से जुड़कर मोक्ष को प्राप्त करें। तो भगवत गीता इसीलिए सुनी जाती है अगर जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए और सारे कार्य अच्छे से करके, सारे रिश्ते, सारे कार्य हम अच्छे से करके, मगर हम मोक्ष चाहते हैं, दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें मोक्ष के लिए उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी की शरण लेनी चाहिए। इसी के साथ हम हमारे अगले चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे आशिका अग्रवाल जी के साथ। सभी को राधे राधे।